दोस्तों ये Vivo V7 मॉडल है। देखिए इसका प्रॉब्लम है, डिस्प्ले और टच दोनों टूट गया है। उसका डिसेंबलिंग करेगा और रिप्लेसमेंट करेगा, डिस्प्ले को कॉम्बो रिप्लेसमेंट करेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए इसका टच अच्छा से वर्किंग नहीं करता है, इसका डिस्प्ले भी रोलिंग हो गया है, इसीलिए इसको कॉम्बो रिप्लेसमेंट करेगा। देखिए पहले उसको पावर स्विच ऑफ करके डिसेंबलिंग करेगा Vivo V7 मॉडल। वीडियो को लास्ट तक देखिए। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny
but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Pas de soleil, 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 pas de soleil.
देखिए दोस्तों, इसका असेंबलिंग कर दिया है। डिस्प्ले को रिप्लेसमेंट किया है, कॉम्बो रिप्लेसमेंट। देखिए अभी उसको लास्ट में एक बार टेस्टिंग करेगा। पहले चार्जिंग टेस्टिंग कर लेता हूँ। देखिए मोबाइल चार्जिंग ओके है। अभी इसका ऑन करके डिस्प्ले को टेस्टिंग करूँगा। देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। उसको टेस्टिंग करना ज़रूरी है। देखिए डिस्प्ले अच्छा से वर्किंग कर रहा है। डिस्प्ले पूरा टूट गया था, इसलिए इसको कॉम्बो रिप्लेसमेंट करना पड़ा। देखिए अच्छा से वर्किंग कर रहा है। मैं इसे रोज़ वीडियो डालता हूँ। वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। उसका भी मैं लास्ट में रबर लगाऊंगा, क्योंकि नया डिस्प्ले लगाया है। तीन रबर लगाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।